Good morning, students. Welcome to the online class of grammar. Today we are going to start our chapter number 19, proposition. So let us begin with our chapter. Proposition of time. Proposition of time tells us when something happens. For example, we reached Venus on July 15. We got out of the ship at 10 a.m. So students, here you can see that this is proposition of time. Preposition of time में हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन और एट का यूज़ किया हुआ है. तो अब preposition of time हमें बताता है कोई चीज़ कब होने वाली है. For example, here it is we reached Venus on July 15. We got out of the ship at 10 a.m. तो यहाँ पे ऑन और एट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रपोजिशन है, क्योंकि हम कब पहुँचे वीनस में? ऑन जुलाई 15 जो डेट बता रहा है. ओके, इट्स द टाइम. जो टाइम हमें बता रहा है उसके पहले हमें प्रपोजिशन का यूज़ करना है. ओके, इन. सो वी यूज़ इन टू रेफर टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सच एज मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज. सो हम इन कहाँ पे यूज़ करते हैं? मंथ्स में, season, years and centuries we are using. Example, the Olympic Games were first played in 776 BC. Okay, so यहाँ पे year century दिखाई गई है. So it is used for, it is used for centuries, right? Month, season, years and centuries बताने के लिए हम यूज़ करते हैं. Okay, we use in to talk about parts of a day such as morning, afternoon, evening. हम इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग. ये डेज़ के लिए हम बताते हैं पार्ट ऑफ द डे. कौन सा डे चल रहा है, जैसे सुबह चल रही है, शाम, रात. ओके, सो इनका वहाँ यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द रेसेस बिगेन इन द मॉर्निंग. रेस कब स्टार्ट होने वाली है? मॉर्निंग में, सुबह में, राइट? सो इनका यूज़ हुआ है. The races began in the morning. So in is used for part of the days like morning, afternoon and evening. At. We use at to talk about a point in time. Example, the race began at 7 a.m. Okay, so student, यहाँ पे हमें देखना है at का यूज़ हम करते एक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए. कौन सा? कोई भी कितने बजे है अभी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हियर वी कैन से हियर द बर्ड्स राइज एट 6 a.m. सो हम टाइम बता सकते हैं एट का यूज़ करके. ओके, ऑन. वी यूज़ ऑन विथ डेज एंड डेट्स. ऑन का यूज़ कब करते हैं हम? डेज और डेट्स बताने के लिए, कौन सी डेट है और कौन सा डे है आज. फॉर एग्जाम्पल, the London Olympics began on Friday. So on is the preposition here. कब शुरू हुआ? फ्राइडे के दिन. ओके, और डेट और फ्राइडे के लिए हम on का यूज़ करते हैं. Now we are beginning with our exercise D1. Underline all preposition of time in the passage below. So you can see I have bold the underline and bold the letters which are in the preposition. Okay, so I will read the passage for you and then we will mark out the preposition here. Okay, 8:12 a.m. on July 2012, hundreds of bells were rang for 3 minutes across England to celebrate the beginning of Olympics. तो ओलंपिक्स के लिए इंग्लैंड में बहुत सारी घंटियाँ बजाई गई उसके सेलिब्रेशन के लिए. ओके, हंड्रेड्स ऑफ बेल्स वर रैंग, मतलब बहुत सारी बेल कब हुई, लेकिन कब हुआ? सुबह 8:12 AM. ओके, एट, यहाँ पे टाइम दिया इसलिए हमने एट का यूज़ किया हुआ है. एंड ऑन वी हैव यूज बिकॉज देयर इज़ अ डेट 26 जुलाई 2012, तो इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया हुआ है. ओके, so proposition you can see here where time is mentioned you have to write at, and when is date is mentioned you have to write on. Okay, so keep in mind that the loudest sound of course came from ringing the Big Ben. The biggest bell in Big Ben is called the greatest bell. It's called the Great Bell. It weighs 6 tons. It first chimed in July
1859. ओके, सो हियर यू कैन ऑल्सो सी, हम बेल के बारे में बता रहे हैं कि उसे बिग ग्रेट बेल कहा जाता था और उसका वेट 6 टन था. इट वॉज फर्स्ट अचीव्ड इन जुलाई 1859. उसे कब लगाया गया था? जुलाई 1859 में उसे बिग बैन को लगाया गया था. ओके, सो यू कैन इमेजिन द साउंड इट मेक्स, बट दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट बेल in England. A little distance away from Big Ben is the 17-ton bell at St. Paul's Cathedral. This was cast in 1881. These large bells, along with cycle bells, door bells, phones, school bells, prayer bells, and bells on pet's collar, were all rung in unison. However, at 8:15 a.m. everything was quiet again. Okay, so here was a passage about the bell here. Here you can see where date and time is mentioned. We have used in and at and on. Okay, so you can see here we have used before date on. If you want to save, if you want to show a specific date or time, we have used in and on. Okay, and for time we have used at here. Okay, beginning with our next exercise, take the correct preposition. The spaceship is arriving on June 26 at 2 o'clock. In the afternoon, we are going to receive our alien friends at 1 o'clock in the afternoon. We are planning to take them to the Gir Lion Forest. It rains heavily in July, so the best time to see the lion is tomorrow. We can leave at 4 p.m. We can return to our homes at 3 p.m. On Sunday, the alien will stay with us for a week. So this is about the story about a spaceship. You can see here. In this we have learned what we have learned about the time. If its date is there, we can write on and in, and if its time is there, we will write at. So you can see here on June 26. Okay, and next one is afternoon. In July, the spaceship is arriving on June 26 at 2 o'clock in the afternoon. So we will use in, okay, for the part of the day. Okay, and when are the alien friends coming? At 1 o'clock. We will use at for clock or at to show the time. And it rains heavily in July. Okay, date is mentioned, so we are using in here. And we can leave at 4 p.m. Here also time is written. So wherever you can see the time, you have to write at, and where is the date is given, you can write on and in. Okay, so this was our grammar lesson. Read again this whole chapter, okay, and write in a good handwriting in the notebook. Okay, so that's all today now. Thank you and have a nice day.